व्हाट्सअप यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ajvlogs। तो आज मैं मेरे फ्रेंड के यहाँ पे आया हूँ जो कि रहता है बिम्बिसार नगर में। ओके, सो एक्चुअली उसने एक विंडशील्ड परचेस किया था। उसके पास है ड्यूक 200। आज मैं उसको इंट्रोड्यूस करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये है मेरा फ्रेंड केतन नाइक। तो एक्चुअली इसको ही पता है इसने कहाँ से परचेस किया था, क्या प्राइस था, तो इससे ही जान लेते हैं भाई क्या था। अली एक्सप्रेस से मैंने परचेज़ किया था विंडशील्ड ABS प्लास्टिक प्रोटेक्शन के साथ में। आई थिंक सो इसका प्राइस 946 रुपीज़ था, बट मेरे को फर्स्ट परचेज़ था अली एक्सप्रेस से, तो आई गेट अ $4 ऑफ $4 का डिस्काउंट। कूपन। सो मेरे को टोटल ओवरऑल 638 रुपीज़ में पड़ा था। विद इन 15 डेज़ वो आ गया विदाउट एनी डैमेज, विद ऑल गुड। सो होप सो 1 पीस में आ गया वो। सो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप चेक कर लीजिए। आपको अच्छा लगा तो वहाँ से परचेस कर लेना। मैं आपको विंडशील्ड दिखाता हूँ। तो ये रहा उसका विंडशील्ड, इसको ओपन करते हैं। केतन भाई आप ही ओपन कर लो। अच्छे से रैपिंग करके लाया था। ये थर्मोकॉल का भी अच्छे से रैप था उसके अंदर। तो ये रहा ट्रांसपेरेंट, फुल ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड। क्वालिटी वाइज गुड है, अच्छी है। ऑलरेडी इसको 4 होल्स आते हैं इसके साथ में, जो कि अपने ड्यूक को भी रहता है। KTM के लिए ही है ये प्योरली फॉर KTM ड्यूक के लिए है, जो कि कोई भी ड्यूक को लगता है ना, 390 और 250 200 और ओल्ड मॉडल 390 ओनली। ओके। सो ये 4 होल्स ऑलरेडी इसमें है। यहाँ पे भी है 4 होल्स। ये यहाँ पे अभी ऐसे लग जाएगा। ये बराबर 4 स्क्रू 4 यहाँ पे। नंबर प्लेट निकालना पड़ेगा, उसके बाद में सब कुछ हो जाएगा, वो ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी चलते हैं। तो इसको भी विनिल भी लगाना है और थोड़ा स्टिकरिंग भी करना है, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो अभी चलते हैं, वहाँ जाके देखेंगे कैसा है। चलो चलते हैं। Come back here. Now it's time to change the windshield. So first you have to remove these 4 screws.
check this how it's look. Thanks for watching. If you like my videos, don't forget to like and subscribe to my channel. सब्सक्राइब करो भाई एजे ब्लॉग एजे ब्लॉग Thank you. Goodbye. Have a nice day.